Good morning, everybody. Today we are going to discuss about very important topic from the marketing mix. That is product life cycle. It is also been called as PLC. PLC, product life cycle. Now, what is product life cycle? Like we all have a life. We all have a life. Product is also having a life. जैसे हम सबकी लाइफ होती है वैसे प्रोडक्ट की भी लाइफ होती है. सबका एक लाइफ का जर्नी होता है, वैसा प्रोडक्ट का भी लाइफ का एक जर्नी होता है. उसका बर्थ होता है, वो ग्रो होता है, वो मैच्योर्ड होता है और एक समय आता है कि वो मार्केट से खत्म होके चला जाता है. जैसे हमारा लाइफ रहता है वैसे उसका भी एक लाइफ रहता है. तो आज के सेशन में हम देखेंगे एक प्रोडक्ट कौन से फेजेस से कौन से स्टेज से गुजरता है अपने लाइफ में. एक प्रोडक्ट कौन से डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंटली रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स देता है. That is what the area of study today. Product life cycle. When we discuss about the product life cycle, it is necessary to understand the various phases of the product life cycle. What we will do in the introduction, what we will do in growth, maturity, and what we will do in the decline. So what is the main agenda of the chapter today is, we are going to discuss about the product development stages. कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले वो डेवलप होता है. वो एक मार्केट में उसको एंट्री करने से पहले उसके ऊपर बहुत सारा काम किया जाता है. प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस. देन वी विल स्टडी अबाउट द प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल. कौन से स्टेजेस से वो गुजरता है. और वो स्टेजेस में सबसे पहला स्टेज इज इंट्रोडक्शन स्टेज. द सेकंड स्टेज इज ग्रोथ स्टेज. द थर्ड स्टेज इज मैच्योरिटी स्टेज. And the fourth stage is retirement or a decline stage. Again, I am repeating. Introduction stage, growth stage, maturity stage, and decline stage or a retirement stage. So these are the basic 4 stages from which product passes. You can also add one more stages before introduction, that is product development stage. Product development stage. Now to understand the product development, try to understand this particular slide. What this slide means to say, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले कौन से प्रोसीजर से पास होता है, कौन से प्रोसीजर से आगे जाता है. ऐसा तो नहीं होता है कि इमीडिएटली कोई भी प्रोडक्ट लेके हमने मार्केट में दे दिया. दैट इज नॉट अ गुड थिंग. देयर इज अ चांस वी मे फेल. द प्रोडक्ट मे नॉट सर्वाइव. प्रोडक्ट मे नॉट कंटिन्यू. पीपल विल नॉट बाय द प्रोडक्ट. इट मे हैपन. सो what happens to the product? So this is what the product development stage. What exactly we are doing in the product development stage? The first thing before product enters into the market, first when we develop the product, it is necessary to get an idea about the product.
idea may click, idea may survive, idea may flop. But at least you should think. Until and unless you are not thinking properly, you will not be able to develop a product which market requires, which customer requires. You will not be able to produce. So first thing which you need to understand is idea generation about the product. If you remember, while explaining marketing in the first lecture, we have discussed about the scope of marketing. Scope of marketing, how vast the marketing is. That time we have discussed that marketing is a vast concept. It is not only buying and selling or just advertising and all. So that time also we have discussed marketing is nothing but the idea, developing an idea about the product, then designing the product, then developing the product, producing the product, promoting the product, demand generation in the market about the product, then distribution of the product, then consumption of the product, then after sales services related services to the product, then feedback of the customer about the product, and according to the feedback, new idea generation. It's a lengthy process. It's not a simple task. So, if you have to produce a product which survive properly in the economy, survive properly in the market, you must have a proper idea about the product. How you will develop the idea about the product, how you will design the idea about the product. You need to survey, you need to go through in detail about what is needed in the market. What is needed in the market. Now, dear student, if you will understand this concept properly, it will also help you to start your own business. This is a high time where you can think of starting your own business from home using the digital platform. So you also start analyzing according to these points to what exactly you can do. It may help you to develop a kind of a business which will give you a handsome income also. It will help you to give you a better income also. So that is what we are planning to do. So what is needed in the market? Market में चाहिए क्या? हमें वो प्रोडक्ट बनाना है जो हमारे कस्टमर को चाहिए, वो प्रोडक्ट नहीं बनाना है जो हमें पसंद है. We have to develop a product which our customer require. We don't want to develop a product which we know how to produce. The second thing comes in the mind here is then how do we make this product better? इस प्रोडक्ट को मैं और बेटर कैसे बना सकता हूँ? ये प्रोडक्ट को मैं बेटर कैसे और कर सकता हूँ? How can I develop this product in much better way? I have to check with the other company and so I have to check with the other people also who are producing and developing such product, and also we have to check what kind of services they are giving, how perfect they are developing the product. So the first thing comes in the mind when we are entering into the market is idea generation about the product. Until and unless you are not clear with what exactly you need to supply in the market, you will not be able to sell the product properly. So idea generation. Second thing comes, whatever idea is generated, you have to screen the idea. Screening कहते हैं जिसको go through scrutiny, checking, finding out how to develop, how to do screening. Idea screening.
यहाँ पे आप लोगों को 2 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करना पड़ेगा. 2 पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड. आइडिया तो हमने बना लिया, सोच तो लिया कि हमें क्या करना है. देन व्हाइल स्क्रीनिंग यू हैव टू फाइंड आउट डू कंज्यूमर वांट्स दिस प्रोडक्ट. ये जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे वो कंज्यूमर को चाहिए क्या या नहीं चाहिए. डू कंज्यूमर वांट दिस प्रोडक्ट. क्या कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट चाहिए. अरे सेम प्रोडक्ट बनाने वाले और कितने कंपनीज है. व्हाट कंपटीशन एग्जिस्ट आउट इन मार्केट. ये प्रोडक्ट बनाने वाली और कितनी कंपनियां है. टू चेक इट इज नेसेसरी. सो second thing comes is idea generation. Then second thing comes is idea screening. After idea generation, idea screening. You have to screen each and every, scrutinize each and every idea. Once you comes to know, definitely the consumer will be happy with such product. And we are trying to produce a product which is going to be better product than what competitor is offering. जब आपको समझ में आ जाता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो बेहतर प्रोडक्ट है और वो कंपटीटर से भी अच्छा प्रोडक्ट है, then you have to go to the third level at the product development, that is concept development. Concept. Creating a prototype so consumer can see, feel, etc. Don't you think so? You have to create a sample, you have to create a model, you have to create a basic structure. For example, a building construction, when it is being happening, there must be a small kind of a sample which is created, which shows कि ये building कैसा होगा, ये बिल्डिंग में क्या डिजाइन होगा. At the same time, the sample plates are being shown which explains कि actually तुम्हें जो घर मिलने वाला है वो कैसा मिलने वाला है, इंटीरियर कैसा होगा, what kind of flooring will be there, what kind of ceiling will be there, where you can put your TV, where you can put your AC, everything is being explained properly when they develop the particular. So that is what we call it as a concept development. What exactly you are going to offer to the people, it should be shown so that the consumer can see and feel कि मुझे ये मिल सकता है. अगर मैंने ये कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा तो मुझे ये मिलेगा. एक कॉमन सेंस की बात आप देख सकते हो. मोबाइल खरीदने जाओगे तो डेमो पीस रहता है, डेमो मॉडल रहता है, आपको बताया जाता है कि कैसा मोबाइल आपका होने वाला है. That is demo piece. So that is what you need to develop, a kind of a concept which helps you to make people aware and feel what exactly they are going to get in the product. Everything will be communicated to the customer in a proper way. After concept development, you need to go with the developing a marketing strategy. Very important thing, friends. When we speak about marketing strategy, it is necessary to find out who are our targets, how can we attract the targets towards the company, and how this potential buyer can be converted into actual buyer. मैं फिर से बोलता हूँ, how this potential buyer will be converted into actual buyer. There are potentials. They may buy, they may not buy. They may buy, they may not buy. But it is our duty and it is our responsibility. It is the
responsibility of the sales and marketing, especially the marketing department, to convert the potential into actual, convert the potential buyer into actual buyer. So that is what the strategy we document. Using research, when you have to understand what the buyers require, you have to do the research to identify target market, address how you will sell to target. It is necessary to identify the target market and also addresses how you will sell to the target. These are the things which is required. You have to do the research. You have to address how you will sell to the target. You have to find out the way, find out the different solution, then how you will reach to the maximum people. This is what the need of the hour. So, market strategy. Then comes a very important part. Feasible, or I can say feasibility study, viability study, or I can say, are you capable of doing this? And if you are capable, then how you will do it? So two important questions. Two important questions. Number one, can you produce it? क्या आप प्रोड्यूस कर पाओगे? Important question है. Question number two, can you sell it? क्या आप इस प्रोडक्ट को बेच पाओगे? ध्यान से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी. You have to find out a way. Can you produce it? तुमने सोचा कि मुझे कैसा प्रोडक्ट बनाना है जो आज तक किसी ने मार्केट में नहीं बनाया है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो कॉम्पिटिटर को भी मैं फेस करूंगा, या मार्केट में भी जाऊंगा, किसी को नहीं मिला उन तक पहुंचूंगा. This, that, everything is fine, but that is on a paper. But originally, will you able to do that? Can you produce it? क्या प्रोड्यूस कर सकते हो? चेक करो, क्या आपके पास उतना फाइनेंस है? क्या आपके पास उतना ह्यूमन रिसोर्स है? Do you have all kind of resources which is required to produce the goods? Do you have all these facilities? Yes or no? Check it out. Until and unless you don't know how to produce, when to produce, whom to produce, and how the production will take place, you will not be able to survive. You will not be able to produce. So the most important part is, it is necessary to understand how you can produce it. And the another question comes in the mind is, can you sell it? बेच पाएगा? नहीं बेचेगा तो कोई फायदा ही नहीं है तेरा इतने सारी बातें करने का, कोई आउटपुट ही नहीं है, because you are not able to sell. So the important question comes is, क्या आप इस प्रोडक्ट को बेच पाओगे? Can you able to sell this product or not? So the question is, can you produce it? And then the question is, can you sell it? These two questions are most important questions. This is called as a feasibility study. Feasibility is nothing but to find out whether the particular idea is feasible or not. Then comes product design. Adding features to the product that consumer wants. Adding features to the product that consumer wants. Consumer को जो भी product चाहिए, उसके अंदर उसके features, उसके quality, उसका design, ये सारी चीजें हमें उसके अंदर लेके आनी पड़ेगी. Adding features to the product that consumer wants. वो सारे features उसमें add करने जो consumer को चाहिए. We have to create a design which is consumer friendly. The design which consumer wants. So, just revising the various stages of product development. The first, idea generation. Then comes idea screening. Then comes concept development. Then comes
market strategy, then comes feasibility study, then comes product design, then comes test marketing. Before sending the product to the market for actual selling, before general public starts buying our product, it is very, very necessary to get your product tested. It is necessary to check, it is necessary to taste the product. It is very important to find out whether this product is, we can sell it into the market or not. So test marketing. तो कहते हैं कभी कभी किचन के अंदर कोई भी सब्जी बनाने के बाद एक बार घर में जिसने रसोई की होती है, खाना बनाए रहता है, वो एक बार उसको टेस्ट करके देखता है कि बराबर है या नहीं, या किसी और से टेस्ट करो तो जरा चेक कर, तो बाहर जाने से पहले यही पे टेस्ट हो जाए तो समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। अगर कोई कमी है, नमक, मिर्ची या तो कुछ ज्यादा है, तो क्या करना है अभी कर सकते हैं। एक बार गया फिर कुछ नहीं कर सकते। एक बार मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, एक बार हाई लेवल में प्रोडक्शन हो गया, एक बार मार्केट में एंट्री कर दिया, फिर वो प्रोडक्ट को वापस लेके आना मुश्किल है। इसीलिए टेस्ट मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो टेस्ट मार्केटिंग में देखो क्या लिखा है, रिलीजिंग प्रोडक्ट टू स्मॉल सैंपल to gain or to get the feedback. कुछ लोगों को ये प्रोडक्ट भिजवाना, कुछ सैंपल तक के प्रोडक्ट भिजवाना, जिससे क्या हो जाएगा, लोगों का फीडबैक मिलेगा। जो प्रॉब्लम पूरे मार्केट में जाने के बाद आने वाला है वो पहले आ जाएगा। So you may have a chance to reshuffle the product before it actually enters into the market. You have an opportunity to reshuffle the product. That is what we can call it as a test marketing. And then after testing, once you are clear, once you are happy, once you are confirmed this is what the situation, you have to enter the market. That is what we can call it as a market एंट्री। अब हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में जाने दो। अब देखेंगे लेट, क्योंकि हमने सारा जो भी प्रोडक्ट डिजाइन किया है, सब डेवलप किया है, इतने सारे स्टेज से पार होके आए हैं, अभी फाइनल टाइम आ चुका है कि अभी हमें हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में एंटर कराना है। रिलीजिंग द प्रोडक्ट टू द एंटायर पॉपुलेशन, रिलीजिंग द प्रोडक्ट टू द एंटायर पॉपुलेशन। एंड यहाँ पे शुरू हो जाएगा प्रोडक्ट बिगिंस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मैंने पहले कहा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक्चुअली स्पीकिंग 5 स्टेज है, हम अभी 4 स्टेज पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। लेकिन इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन के पहले भी तो एक स्टेज है जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। वो भी तो प्रोडक्ट का लाइफ ही है। तो ये स्टेज जहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज का एंड होता है, वहां पे शुरू होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो दोस्तों, प्रोडक्ट डेवलपमेंट यहाँ तक सभी लोगों को समझा? यस और नो? गिव योर फीडबैक फास्ट, यस और नो? If you understood the product development, say yes. So I understand you understood the topic, so I go ahead. Yes, Mohit is saying yes. Sumit, Ravan, yes. Swapna, yes. Sagar, Khushbu, yes. Thank you. Students, feasibility of study, I will explain again. Yeah. Feasibility, I will take again. Thank you, Mayuresh. Students,
प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले आइडिया जनरेशन, आइडिया जो लेके आते हैं उसके बाद आइडिया स्क्रीनिंग चेक करो. Idea generation में what is needed to the market, what do we make this product better, how do we make this product better, ये product और better कैसे करें. Then comes the idea generation. Do consumer want this product? सच में consumer को product चाहिए क्या? What competition exists out in market, और market में कितनी competition है. Then comes the concept development, creating a prototype so consumer can see, feel, etc. Example create करना. Market strategy, using research to identify the target market, किसको हम लोग टेक करने वाले, कौन कहाँ पे प्रोडक्ट हमारा बेचने वाले. Then comes the feasibility. Feasibility का मतलब होता है are you capable of, दो बातें होती है, तू प्रोड्यूस कर सकता है, नंबर वन. दूसरा, क्या तू बेच सकता है, क्या तू प्रोड्यूस कर सकता है, क्या तू बेच सकता है. कैन यू प्रोड्यूस इट, कैन यू सेल इट. दिस आर द टू थिंग्स व्हिच कम्स टू योर माइंड. दैट इज व्हाट वी कैन कॉल इट एज अ फिजिबिलिटी स्टडी. कैन यू प्रोड्यूस इट, क्या तू प्रोड्यूस कर सकता है. नंबर टू, कैन यू सेल इट, क्या तू बेच सकता है. दिस आर द टू थिंग्स. फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि तेरी कैपेसिटी है क्या, आर यू रियली एबल टू, तेरे में कैपेबिलिटी है क्या, विल यू एबल टू. These are the two things. Feasibility study. I hope you understood properly. Mayuresh, did you understood? Thank you very much. Then comes product design. According to the study, we have to design the product जो consumer को चाहिए. Then market में बेचने से पहले उसका टेस्ट मार्केटिंग करेंगे, और टेस्ट मार्केटिंग करने के बाद मार्केट में एंट्री करेंगे. तब तक हम मार्केट में एंट्री करेंगे नहीं जब तक वी आर नॉट हैप्पी विद द व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट वी आर प्रोड्यूसिंग. until and unless we don't know what we are going to send it, we will not send to the market, because once the product is entering into the market, it is very necessary to find out the problems in the market. Now, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जहां पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज फिनिश होता है वहां पे शुरू होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल describes the stages a new product goes through from beginning to end. शुरुआत से लेकर अंत तक प्रोडक्ट जो भी प्रॉब्लम से या तो अलग अलग स्टेजेस से मूव होता है, वो पूरा स्टेजेस वो हमारा प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है. हर एक प्रोडक्ट का एक लाइफ रहता है. जैसे मैंने कहा हमारा लाइफ रहता है, वैसे प्रोडक्ट का भी लाइफ रहता है. सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिस्क्राइब्स द stages a new product goes through from beginning to end. From beginning to end. शुरुआत से लेकर अंत तक प्रोडक्ट कौन से परिस्थिति से गुजरता है, उसी को कहा जाएगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. उसी को कहा जाएगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इट इज अ टूल used by marketing professionals to understand the market and plan the marketing mix. It is a tool used by the marketing professionals, जो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, to understand the market, मार्केट को समझने के लिए. एंड मार्केट को समझने के बाद अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कैसा रहेगा, हमारा प्राइस कैसा रहेगा, हमारा प्रमोशन कैसा रहेगा, और हमारा प्लेस यानी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा. Until and unless you don't know, you are not able to understand what exactly the product is, product life cycle is, you will not able to design the marketing plan. So it is necessary to design a marketing plan according to the product life cycle. That is what the marketing mix should be purely based upon the product life cycle. Otherwise, तुम्हें यही नहीं पता चलेगा कौन से स्टेज में क्या प्राइस चार्ज करना, कौन से स्टेज में कितना प्रमोशन करना, कौन से स्टेज में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन करना है. Okay, so why is it called the product life cycle? इसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्यों कहते हैं? डेफिनेटली जैसे ह्यूमन बीइंग का लाइफ होता है, वैसे हर एक प्रोडक्ट का भी लाइफ होता है. हर एक प्रोडक्ट भी अलग अलग लाइफ से गुजरता है. जैसे कि आप देख सकते हो, you can see how the product focus introduction. सबसे पहले क्या होता है, बर्थ, इंट्रोडक्शन स्टेज. इसको कौन सा स्टेज कहेंगे, इंट्रोडक्शन. जैसे ह्यूमन बीइंग का होता है बर्थ,
Then growth. देखो, the child is getting senior, elder. Growth. Then comes the maturity. देखो, परिपक्व हो गया. एक ग्रेजुएट, फॉर एग्जाम्पल, कल आप ग्रेजुएट हो जाओगे तो आप भी मेच्योरिटी के लेवल पे आ जाओगे कि यू आर रेडी टू फेस दिस मार्केट, यू आर रेडी टू फेस दिस वर्ल्ड. एंड द डे विल कम रिटायरमेंट. प्रोडक्ट का लाइफ खत्म होता है. सिंपल लॉजिक है. जैसे ह्यूमन बीइंग का इंट्रोडक्शन, दैट इज बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड रिटायरमेंट होता है, वैसे ही प्रोडक्ट का भी होता है. अभी देखो, अलग अलग स्टेज है. इंट्रोडक्शन में देखो कैसा आपका कब ऊपर जा रहा है, यू आर ग्रोइंग. ग्रोथ में यू आर ग्रोइंग. मैच्योरिटी में कैसा लेवल पे आते हो जो लाइफ के सबसे बेस्ट पॉइंट पे हो के जहाँ पे तुम लड़ने के लिए तैयार हो, यू आर रेडी टू फेस द वर्ल्ड इन अ प्रॉपर वे. देयर इज मैच्योरिटी. And the time will come, then the things will, that you will be in a position not to go ahead and retire. The things will be finished, ending of your stage. अब देखो, इंट्रोडक्शन के बाद सेल्स बढ़ता है, बढ़ते ही जाता है, एक टॉप लेवल पे जाके जाता है, एट द हाईएस्ट लेवल पे तुम्हें लेके जाता है. क्योंकि सेल्स बढ़ेगा तो ही तेरा ग्रोथ होगा ना. Until and unless you will not be able to sell the product in the market, you will not be able to survive. It is simple. So, market introduction, also called as a product launch. देखो यहाँ पे satellite of our company product एग्जाम्पल के साथ बताया है. ये हम लोग मार्केट में इंट्रोड्यूस होने के लिए तैयार है. We are ready to enter into the market. We are ready to face this world. We are ready to fight. हमारा प्रोडक्ट मार्केट में उतरने के लिए तैयार है. तो मार्केट इंट्रोडक्शन, इसको दूसरा नाम ये भी कहा जाता है प्रोडक्ट लॉन्चिंग स्टेज. We are launching the product in the market. This is a peak time where the company can make a huge investment. ये अगर गलत हो गया तो पूरी मार्केट गलत हो जाएगी. इसीलिए लिखा है इट इज एन एक्सपेंसिव फेज. बहुत खर्चा होने वाला है. हाई कॉस्ट और खर्चा एसोसिएटेड विद डिजाइन करना, इसका मैन्युफैक्चरिंग करना, देन प्रमोशन हेवी करना, एंड इन्वेंटरी स्टॉक रेडी करना टू मीट द एंटिसिपेटेड डिमांड. एंटिसिपेटेड मीन्स आने वाले फ्यूचर में जो प्रोडक्ट की डिमांड होने वाली है उसका पूरा करने के लिए आज से तैयारी करना पड़ेगा. heavy design, heavy manufacturing, heavy promotional activities, and proper inventories to meet the anticipated demand. It may also include some other cost, जैसे कि नया पैकेजिंग, नया लेबलिंग, न्यू मार्केट रिसर्च, सर्वे, क्वेश्चनर, लोगों का डिटेल निकालना, इंक्वायरी लेके आना, बायर किधर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे. सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा होने से मार्केट नहीं चलता है. प्रोडक्ट अच्छा होने के साथ साथ मार्केट का नॉलेज नहीं है तो कोई फायदा नहीं है. You must have a thorough knowledge of the market. You have to find out the big question. Who buys new product? ये नए प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, क्या एडवांटेज मिलेगा इससे, क्या कर सकते हैं हम, क्यों कर सकते हैं हम, कौन सा सपोर्ट हमें मिलेगा. There are so many questions. So this product stage is also known as a product launching stage. ज्यादा खर्चा होता है यहाँ पे. हेवी कॉस्ट आर एसोसिएटेड, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रमोशन, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, पैकिंग, लेबलिंग, रिसर्च. और ये सब करने के बाद भी सबसे बड़ा ये सवाल, who buys new products? नया प्रोडक्ट कौन खरीदेगा. Who are the early adapters? कौन हमें पहले एक्सेप्ट करेगा. दूसरा सवाल, लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, किया नहीं किया. everything is confused. Everything is depend upon how we approach the market. हम लोगों को कैसे अप्रोच करते, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड है. Everything is depend on that, how we are approaching the people. If we approach the people in a positive way, proper way, there is a chance that we can survive in a better way. We can reach the people maximally in a better way. So that is the need we have to provide
clearly. Now comes market introduction. Push, pull, push, and pull. About market introduction, push market and pull market. For example, push market. Company यानी कि marketer focus on product placement and obtaining preferential shelf and floor place. कहाँ जाके मैं रहूँ? स्कूल, ऑफिस, कौन सी जगह पे जाके मैं प्रोडक्ट को मैं सेट करूँ? Where should I set my product in a proper way? Where should I set my product in a proper way? तो कौन सी जगह पे पुश करना है मुझे? पुल कैसे मुझे लोगों को मेरे तक खींच के लाना है? How I can pull the market? That is pull. How I can bring the maximum people to the market? Create advertising that create a buzz for the product. लोगों के अंदर एक excitement create करे. Sample यूज करो, कूपन यूज करो, कोई भी प्रमोशन के टेक्निक यूज करो, लेकिन bring the maximum people towards the company. So दोस्तों, हमने ये सेशन में प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में देखा. हमने देखा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहाँ से शुरू होता है. पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमने यहाँ पे समझा और हम लोग यहाँ पे आके रुके हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि मार्केट इंट्रोडक्शन, दैट इज push and pull strategy. We will continue this in the next session. Join immediately within next 3 minutes. Thank you very much.